Amid the big water crisis that has been going on in the national capital for the last few days, the issue reached the Supreme Court. The Supreme Court has now pulled up the Aam Aadmi Party government. The Supreme Court pulled up the government over the prevalence of the tanker mafia and water wastage amid crisis in Delhi and asked the Delhi government what measures they took against the tanker mafia. And criticized the Aam Aadmi Party government as well. The court saying that if the government is unable to handle the tanker mafia, it will direct the Delhi police to take action in this regard. While pulling the Kejriwal government, the Supreme Court asked the government if it filed an FIR against the water mafia or not, and also told them if you are inefficient to tackle the tanker mafia or water mafia, then the court will instruct the Delhi police to do the same. And there seems to be no end to the politics around it as well over the water crisis in the national capital. The Aam Aadmi Party continues to maintain that the water from Himachal has been stopped by Haryana, leading to a water crisis in Delhi. In the midst of this current crisis, the Delhi BJP has lodged a complaint against the Aam Aadmi Party government, accusing it of involvement with the tanker mafia. Addressing the water crisis, Delhi Congress president stated that Delhi is suffering the consequences of the poor attitude of centre and Delhi government both. Listen in. पीने को पानी को कोई सरकार रोके, चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार। वाटर मैनेजमेंट हरियाणा के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा। हरियाणा के शहरों में भी लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पीने का पानी हरियाणा को भी मिलना चाहिए और दिल्ली को भी मिलना चाहिए और अपने अपने हिस्से का पानी किसी को रोकना नहीं चाहिए। दुख की बात यह है कि जिस तरीके का व्यवहार ये दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, लचर जो उनका रवैया रहा है, हम उसका जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी लंबे समय से ये समस्याएं आती रही हैं। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि टैंकर माफिया हो चाहे और वो पानी की सप्लाई का माफिया हो, क्योंकि इस दौरान लगातार गंदा पानी भी पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी इस सारी चीज़ के पीछे है उसको सामने लाया जाना चाहिए। Well, Times Now has also accessed the Haryana government's affidavit that has been filed in the Supreme Court. The response by the Haryana government pointed out that the present scarcity of water in Delhi is largely created by the Aam Aadmi Party government itself. And according to Haryana government, Kejriwal government failed to cut down on its water distribution mismanagement. Haryana government even apprised the court that the state was giving 330 cusecs more water to Delhi than the set quota. Delhi government, Mr. Kejriwal, when he started his political career, he used to talk about tanker mafia. He used to say that Mrs. Sheila Dikshit is in hand in glove, or Delhi government is in hand in glove with the tanker mafia. And now it's other way around. He is in hand in glove with the tanker mafia. They promised London to Delhi, and Delhi is worse than Somalia today. आज आम आदमी पार्टी की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा प्रहार किया है, उनके झूठ और नौटंकी का पर्दाफाश किया है। वाटर की स्पिलेज हो जाती है, वाटर टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है तो उसे चुराने का काम दिन दहाड़े होता है और वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार के संरक्षण में होता है। पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज्यादा पानी हम दे रहे हैं। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहाँ कमी है, पानी की कमी नहीं है। Well, it's a fight for every drop of water. Day after Apex Court pulls up AAP government, there are visuals coming in which are a testimony of Delhi's water crisis. And Pratibha, these visuals will, tell you the truth of how people literally are struggling to get even one drop of water for their family, for their kids. Unfortunate visuals, and we've seen such visuals before as well. The water scarcity has reached a level where just one tanker comes in and we see people going, climbing onto it just to get a few drops of water. And this has been, unfortunately, the situation, while the politics around it still continues.